Hello everyone, welcome to Sports Taza. One of the most brilliant matches I would say. लोग कह रहे थे दिवाली बहुत जल्दी आ गई. I have with me Nikhil from Crazy Nicks, and what a match. Nikhil, I haven't seen a better match since a long time. इतनी Yeah. बात होती है पाकिस्तान rivalry, what to the tournament, and एक साल पहले India lost by 10 wickets. Today, Yeah. a perfect redemption. मैं नहीं कहूँगा rivalry या revenge taken, but redemption at least. Uh, I wouldn't say redemption. I will just say that it was a great match to be viewing. I think there are very few times when you grow up, when you're about 30, that you really get into a game like, okay, no, I really want to be part of this. I wish I was at the stadium. And I think that is how you felt from, say, the last, of course, from the start, but you felt it even more in the last few overs when you saw that first six that Kohli hit, then the three sixes that Hardik and Kohli hit to Nawaz, and before that the way Arshdeep started. Redemption for Arshdeep more, plenty of nonsense talk about him because of the drop catch in a tournament that went by, but to put it past him to start like he did to get the big wickets. Yes, they got a good score, but I think this game had everything that you want. It had no balls, wides, controversial stumping calls, everything that you want from an India-Pakistan game. This was that proper masala Diwali appetite that you want कि भाई ये इसके ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिल सकता तो ये ले लो सब ले लो आज जो चाहिए ले लो. बिल्कुल आपने कंट्रोवर्सीज का टॉपिक उठा ही दिया है. आई थिंक देयर वर थ्री ब्रॉड कंट्रोवर्सीज दैट हैपेंड एंड आई लिस्टेड दोज थ्री डाउन. वन विल बी द अक्षर रन आउट कि क्या वो बॉल, और हम तीनों के बाद बात करेंगे एक एक करके. क्या रिजवान से ग्लव से टूटी थी, क्या वैसे हुआ था. फिर सिक्स ऑफ द नो बॉल, आई हैव द इमेज ऑल्सो कि Yeah. क्या कोहली वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द क्रीज, इम्पैक्ट अगर क्रीज पे होता तो नो बॉल होती नहीं होती. Then third controversy, I don't know, people are twisting the rules, not able to understand कि अगर फ्री हिट होती है, कोई बोल्ड होता है तो क्या रन्स भाग सकते हैं. वो रन्स कोहली के में काउंट नहीं हुए थे, 22 काउंट हुए थे. तो इसको लेके एक अलग कंट्रोवर्सी चल रही है. निखिल, वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, अक्षर का रन आउट. व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं लगा कि वो आउट था. मुझे ऐसा ऐसा भी लगा कि मे बी रिजवान्स gloves had made a larger impact as compared to the ball than hitting the stumps. But obviously, the third umpire saw it the other way and gave it out. I think the moment he did not take too much replays, I felt it will be given out. नहीं तो अगर यूजुअली थर्ड अंपायर को थोड़ा भी हिंट होता है डाउट का तो दे लुक एट 100 मोर रिप्लेस एंड देन टेक देयर कॉल. तो आई वुड स्टिल से इट वाज मोर मार्जिनल कॉल अगर आप ऐसा कहेंगे कि इट वाजंट रॉब्ड ऑफ काइंड ऑफ विकेट. तो शायद थोड़े और रिप्लेस देखते तो बेटर होता. ओके, एंड वो अक्षर पटेल का भाई सेम एंड पे कोहली का रन आउट. सो डू यू थिंक इतने ही रिप्ले होते, और ओनली बिकॉज अक्षर पटेल देयर इज नॉट बीन सो मच टॉक अबाउट इट एंड इंडिया वन द गेम. अगर इंडिया हार जाती, ये कोहली का विकेट होता, हार्दिक पांड्या का विकेट होता, सो देयर वुड हैव बीन मैसिव टॉक्स. आई थिंक द थर्ड अंपायर वाज प्रीटी कन्विंस्ड. तो आई डोंट थिंक कि अगर कोई और होता तो ज्यादा रिप्ले देखते हैं वो. तो बिकॉज आई थिंक द अंपायर वाज वेरी श्योर तो ही वेंट ahead and did that and give that decision. Sorry. Point taken. Coming to the second point, and I'll show this image. I'm not going into the tweet, just going into the image. So आप बैक फुट देखिए, जस्ट इनसाइड द क्रीज है. फ्रंट फुट आगे है, इम्पैक्ट बहुत आगे है. वुड यू कॉल दिस अ नो बॉल और इज दिस नॉट अ नो बॉल? सी बोथ. पहले वाला तो फिर भी मैं कहूँगा इट वाज स्टिल इन द रूल्स लेस मार्जिनल. ये एकदम सब्जेक्टिव कॉल है. यूजुअली ये वेस्ट हाई कॉल्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी सब्जेक्टिव. आपके फेवर में गया तो आपको लगता है कि हाँ नो बॉल था, आपके फेवर में नहीं गया तो आपको लगता है कि नहीं नो बॉल था. और इसका प्रॉब्लम ये है कि यू कैन रेफर दिस टू द थर्ड अंपायर. यस. दिस कॉल्स हैव टू बी टेकन बाय द ऑन फील्ड अंपायर. तो अगर एक बार ऑन फील्ड अगर उस पर डिसमिसल होता तो ये डेफिनेटली फिर रेफर कर सकती थी इंडिया या पाकिस्तान के भाई हमको कैच आउट है या जो भी है. तो वो एक अलग फिर डिबेट बन जाता. बट अगेन दिस वाज एन ऑन फील्ड कॉल.
प्रॉबेबली मार्जिनल लग रहा है नो बॉल, बट वो थोड़े आगे भी थे। तो अगेन अब ये कैसा है, ये होता तो वो पीछे होते तो कैसा होता, उस टाइम पे अंपायर को जो लगा वो उन्होंने, एज पर द रूल्स ही फॉलोड द रूल्स, सो आई डोंट थिंक एनीवेयर any rules were kind of broken, and yeah, it did look more no ball than not a no ball, but it could have easily been the other way as well. Absolutely, even sport, it was a no ball, and Nawaz was just unlucky. So yes, it was hard luck and it was a calculated move कि नवाज had to bowl the last over. बाबर आजम के पास भी और Yeah, कोई option नहीं था. Kohli said that they need a ball. निखिल लास्ट ओवर में मतलब 16 और 6 चाहिए. हार्दिक पांड्या गेटिंग आउट, डीके टेकिंग अ सिंगल. डिड यू थिंक कि यार 15 और 4 भारी पड़ने वाले हैं, स्पेशली इन 13 ऑफ 3, या तब भी होप्स थे? I'll be very honest, मेरे को होप हारिस रऊफ को सिक्स मारा उसके बाद ही हुआ. Till 28 from 8, I felt this is going way too far. I think it started feeling much more when it कि जब आप 70 from 36 से उसको आप 50 और 48 from 18 लेके गए, तभी मुझे लगा कि दिस इज गेटिंग फार टू मच टू डू टुवर्ड्स द एंड, और आपको क्योंकि इट्स अ बिगर ग्राउंड, यू नीड प्रॉपर बिग सिक्सेस देन टू क्लियर द फेंस. छोटा ग्राउंड नहीं है कि आपने थोड़ा आगे आके थोड़ा मिस भी हुआ तो भी कैरी करेगा, वैसा नहीं होगा. यू हैव टू एक्चुअली टाइम वेरी वेल, and Virat did that 28. I don't think I'll forget that back foot hit over long on for a long, 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 long. I can't. I will continue to say long as I can, because it is incredible skill. Slower ball है, आप पीछे हो, बैलेंस नहीं है, yet you are able to find enough momentum into your shot that you're not mistiming it. That flew over Yes. the fence behind the side screen. So it was properly timed. And then he got a very good New Year gift, Diwali gift, एक जो मिली उन्हें, and he's like, please, thank you so much, ऐसे गिफ्ट देते रहना. 6. तो 6 से 16 पे मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे होप है. और आई थिंक हार्दिक का स्ट्रगल आपको दिख रहा था कि मे बी ही वॉज नॉट रनिंग एट हिज बेस्ट, एंड ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा कि हाउ ही कॉम्बैट्स हार्ड लेंथ्स, क्योंकि वो इशू रहा है. इंग्लैंड ऑल्सो यूज्ड इट वेरी वेल अगेंस्ट हिम, एंड सो डिड साउथ अफ्रीका टू एन एक्सटेंट. तो आई फेल मे बी नवाज है तो शायद हार्दिक में नॉट हैव एज मच डिफिकल्टी एज कम्पेयर टू अ पेसर. पर हाँ, जब आउट हुए तब ऐसा लगा कि इफ कोहली डजंट गेट द स्ट्राइक, because DK had just come in. So you don't know how. I mean, with DK, it's always going to be either he goes 4-6-6 and wins the game, yeah, so he could easily miss a few balls and he will not be wrong for that. So I think the best thing happened that he gave the strike to Kohli, and of course, then the rest was history. Absolutely, that shot that you spoke about, Haris Rauf को जो मारा, that's been the most talked about shot. क्या Yeah, beautiful shot था. And Haris Rauf is not bowling at 125, 130. We saw he was exactly. bowling at 150 today. That ball wasn't 150, but Haris Rauf है, bouncer आ रही है, and just standing and punching it, and the ball going for the 628 of 8 पे मुझे लग रहा था कि यार होप कम है, क्योंकि ये दो बॉल में अगर 8-6 रन भी आते हैं तो भी 20 प्लस रन ऑफ द लास्ट ओवर. चाहे स्पिनर ही हो, टफ जरूर रहेगा, बट व्हाट अ विन. कमिंग टू द थर्ड कंट्रोवर्सी निखिल, जो है कि अगर आप बोल्ड हुए, आपका बैट नहीं लगा, एज नहीं लगा, साइड नहीं लगा, फ्री हिट थी, तो क्या आप भाग सकते हैं, और इज इट? इसमें कंट्रोवर्सी है ही नहीं, क्योंकि द रूल सेज द बॉल इज नॉट डेड if the stumps are hidden of a free hit. So you can obviously run 4, you could run 5, they could do anything of that ball. And just to tell our viewers, those runs did not go into Virat Kohli's runs Yeah, to account. say the वो least. सिग्नललेस बस, अगर बैट या एज लगता तो विराट कोहली के खाते में भी वो रन जाते, तो उसमें कुछ इलीगैलिटी नहीं है. बस एक मुद्दा उठ गया है, बन गया, so we thought we'll talk about it. Talking about a few other things, Nikhil, that went Yeah. right for India, that didn't go right for India. First of all, Pakistan openers, Indian openers, दोनों ही फेल कर रहे थे. क्या इंडियन ओपनर्स फेलिंग, was it expected, a 10 for 2 start? Uh, I think it's a very tricky thing to call, क्योंकि जितना हमने राहुल और रोहित को देखा है, और एक्चुअली कोई भी ओपनर को लो, जब भी बॉल कुछ करता है शुरुआत में, तो इट हैज ऑलवेज बीन डिफिकल्ट फॉर एनी सेट ऑफ बैटर टू रियली गेट गोइंग. एंड रोहित डिड मेंशन at the post match
post match presentation that they did feel it will not be an easy chase क्योंकि they got 159 and there was enough help. अब देखें कीपर कितना पीछे खड़ा था. I mean, you don't see that very often in recent cricket. So it just told you that there was nice pace, bounce, and carry. What I did feel at times is, and maybe I could be completely wrong here, okay, maybe you try to protect yourself more as compared to playing your natural game in terms of playing your shots. अब जैसे I read a very interesting tweet from Cricketing View. I'm not sure how many people follow him, and the tweet just came to my timeline that when you have test or proper traditional batters like Rizwan, Babar, KL Rahul, Rohit, when there is movement, their first instinct is to not get out. Which, if you compare it with somebody like a Finn Allen or a Chris Lynn or an Alex Hales or a Paul Sturdy, their first instinct is to मैं कहाँ पे फोर मारूं और वहां पे मैं आउट नहीं हो सकता. तो आउट नहीं हो सकता हूँ भी सोच रहे हैं, बट पहले वो ये सोच रहे हैं कि कौन से बॉल पे रिस्क लेके मेरे को कम चांस है आउट होने का. तो आई थिंक वो शायद एक माइंडसेट का फर्क हो जाता है कि एंड अगेन इट्स अ वेरी थिन लाइन. अगर केएल हट के मारने जाते और इनसाइड लग के बोल्ड होते तो भी हम यही कहते, और जैसा उन्होंने डिफेंड करके आउट हुए तो भी हम यही कह रहे. तो आई थिंक इट इज समथिंग दैट ओनली द बैटर्स कैन टेल अस कि व्हाट वाज एक्चुअली देयर आइडिया. But again, नए बॉल है तो you will always have trouble no matter who is facing you. बिल्कुल, and very rightly said, you spoke about these four openers. चारों openers, both बाबर रिजवान started very cautiously. फिर उसके बाद शान मसूद आए, बहुत ही cautious start. Indian openers भी लग रहा था कि यार they trying to protect the wicket, not looking at scoring runs. And केएल राहुल की आपने बात तो कर दी है. लोग ऑलरेडी कह रहे हैं कि नेदरलैंड्स का अगला गेम है, 50-70 इनकमिंग है. मतलब उनकी उस पर तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहे. लोग कह रहे हैं कि ये मैच ठीक है, नेदरलैंड्स कब आएगा ये बताओ ताकि मैं थोड़े रन मार लूँ. So yes, but the Indian openers do need some runs because आज भी जैसे था कि यार पिछले मैच पाकिस्तान के साथ टॉप ऑर्डर नॉट परफॉर्मिंग, टुडे आल्सो नॉट परफॉर्मिंग, बट कोहली हार्दिक परफॉर्मिंग एट द एंड. हार्दिक की मैं बात करूंगा. यू स्पोक अबाउट हार्ड लेंथ निखिल, बट हार्दिक wasn't fit. कल उसको थोड़ा नेट में लगी थी, इंजरी थी. आज 4 ओवर डालने पड़े, 3 विकेट ली, स्कोरिंग 40 of 37. Barring his last 10-12 balls, do you think Hardik's innings should be criticized, or is it an appreciated partnership that was needed? I don't think he slowed down at the like only towards the end. क्योंकि आप देखें तो वो आए तब से for both Virat and Rohit, if we can actually just check their scores in terms of how they accelerated. So I think if you see even Kohli was going at a decent rate before they got into that Nawaz over and they tried to target him. So I think Yes. एक चीज काफी clear थी शुरू से ही कि it is not going to be a case where one of the two can really take off. क्योंकि they were not able to hit pace and Shadab I think began really well and he never allowed Indians to get those boundaries of him. तो जो भी प्रेशर था आपको पता था कि नहीं ये सारा काम जो करना है वो आपको स्पिन के ओवर में ही करना है. तो आई थिंक बोथ ऑफ देम वेर सेटिंग अप फॉर दैट. और सो आई जस्ट गॉट टू द बॉल बाय बॉल ऑफ देम. तो बिफोर कोहली accelerated, Kohli was 28 in 29 and Yes. Hardik was 29 in 21. So I think before Kohli took off, it was Hardik who was doing the मैं ज़्यादा risk लेता हूँ आप wicket संभालो. And then when I think Kohli spotted that वो हार्दिक की टाइमिंग नहीं हो रही इतना, तो then Kohli was the one who really then took off the mantle from there and Hardik continued to kind of get into a struggle कि भाई अब मुझसे वैसे हिट्स नहीं लग रहे. तो आई थिंक वो एक हार्दिक का फिटनेस का भी शायद इशू हो सकता है. और जैसा हमने डिस्कस करा वो फ्लुएंसी हार्दिक की इनिंग्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. आपने देखा बिल्कुल. even during the game it felt like he was trying too hard to hit, or so whether it was because of the fitness or whatever that is we may not know. So I think it was a very strange innings. Had India not won, we would have definitely talked a lot more about that now. But I don't think you could have done anything different as compared to say कि वो जो आप 29 21 थे दोनों शायद अगर 10-5 रन और बना के रहते आगे तो मे बी they wouldn't have
we needed to do so much towards the end. But the thing was, उस time पे you didn't see the runs coming क्योंकि that was how well Pakistan was controlling the game और क्योंकि इतने विकेट गिर चुके थे आपके, you knew कि आप undue risk नहीं ले सकते यहाँ पे and you wanted to take the game deep. तो I think उस हिसाब से देखा जाए तो they came very close. डीके भी लास्ट ओवर में बैटिंग करना है, उसके पहले भी आ जाते तो आई डोंट थिंक प्रॉब्लम होता क्योंकि शादाब हैड एनीवेज बोल्ड आउट एंड if you come in the last 3 overs, this is the kind of role that you are planning for. Okay, you need more than 2 runs every ball, so this is where we've trained for that. Absolutely, इसलिए मैंने कहा था हार्दिक के लास्ट 10-12 बॉल नहीं, क्योंकि 29 of 21 आपने बोला, then he scored 11 of his last 16 balls. एंड में लग रहा था clearly struggling for timing. To all our viewers who are new to the channel, do like, subscribe and comment. Put your questions in the live chat. Nikhil will be answering them. Nikhil, another question that I want to talk about is Akshar Patel. So he did not bowl any over in the warm game today. एक ओवर डाला. He was very successful in the Australian series. आज भी काफी लेट बॉलिंग करने आए, लगा था पावर प्ले के बाद आ जाएंगे, नहीं आए. अश्विन भी नहीं आए थे immediately. Shan Masood was batting. Today bowled 1 over and that is Hardik had his score of 4 overs. Do you think this is the way forward for Indian spinners, and was it a surprise Chahal was not picked today? I think it was a very conditional call because you saw the help that Pacers were getting, which is why they said, okay, we can hold back the spinners. And it is the same thing that India did with Nawaz, that they did with Akshar Patel. कि आपको पता है एक बॉलर आपको टारगेट करना है, and again because Ashwin was fairly economical and not giving away too much, which is why they still tried कि okay एक ओवर हम अक्सर का देखते हैं, and then in that over Iftikhar Ahmed proper went Jai Mata Di that this is the over I want the sixes, and suddenly the innings had momentum. और वही फिर हार्दिक आ गए तो विकेट गिर गए वापस. So I think maybe it's a sign, and also it's a good sign that India at least have an option that you could get away with, Akshar bowling just 1 over and not having to bowl people for the sake of it because you have other options. ऐसा भी हो सकता है कि एक किसी मैच में अगर आप देखें कि पेसर्स को हेल्प कम है तो शायद हार्दिक कम बॉलिंग करें and you would see Ashwin and Akshar or whoever is the second spinner, they get to complete their quota and Hardik doesn't do that. तो आई थिंक वो ऑप्शंस जो इंडिया को चाहिए वो मिलते हैं because they have somebody like Hardik and Akshar in their ranks. Absolutely. Another question that I want to take is another from the sports breakdown. They're saying that Rohit and KL should change their approach, and they shouldn't be so defensive. So there's been a lot of talk about Indian team batting with intent, starting aggressively. कि भाई हम मारने जाएंगे. We've seen that in some matches. We've seen them fail in some matches. So do you think this is the right approach, that we should attack from the first over, even in a 160 target? See, I'll not say we need to attack from the first over. I'll still say no matter which kind of, whatever brand of cricket you want to play, eventually it's about playing on the merit. And if you are going to go too ahead of yourself, you will find that, you've lost 4. But if you're erring on the side of being too cautious, you might also end up on the same side. So you can't always be like, I'll keep attacking. But yes, what you would definitely want to do is put some pressure back on the opposition and let them not dominate or bowl wherever they want to. तो जो हमने काफी पहले भी जो भी क्रिटिसिज्म थोड़ा विराट का रहा है over the last 1 year has been के स्पिन के खिलाफ he's allowing spinners to bowl where they want to. तो वहाँ पे you have clearly seen the difference now that he's stepping out, getting the gap far more as compared to before. So he's not getting stuck. So with this regard is where I feel the openers might be getting stuck, that they are in two minds whether how hard should I go or how more conscious should I be. And because it's the opening job, or I do feel chasing it should be much more easier because you are able to pace the knock क्योंकि आपको पता है टारगेट क्या है, तो you don't have to really go hell for leather. तो पहले बैटिंग में अगर आप, मुझे लगता है अगर आप थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस हो भी जाते हो तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि it is fine, you could still make up or you could not make up, but it's a very thin line to cross क्योंकि आपका जो इंटेंट है it is to put pressure, but if you lose 2 wickets in that intent, you are suddenly going to be like, dude, what was the need to play to so many shots? तो वो बहुत ही it's a very brave line to walk, and I think the team will also realize that it is one thing to always want to be positive,
but the conditions, the bowling attack also has to give you something कि भाई मैं यहाँ पे प्रेशर डालूं. अब जैसे आज bowling कर रहे थे नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी, हरीश राव, the ball was spitting onto the batter. So I don't know what else could they have done, but again अच्छी bowling है तो आप उन्हें respect करो, but maybe yes going forward you can't always have कि यार अच्छी bowling कर रहे तो you'll have to find a way out. So that is something that I'm very interested to see कि वो कैसे होता है. जैसे सूर्या आए तो उन्होंने 2 चौके लगाए, तो it just looks very different, but then that's because Surya is in form. So I think agar KL and Rohit also get good enough scores behind them, maybe they'll automatically find a way to get that one boundary or two boundary early कि आप pressure सामने आप pressure bowlers पे डाल दो वैसा. Bilkul, and you spoke about Pakistan's bowling attack. Just before ending, I want to talk about that and ask you. और मैं 3 teams का पूछूंगा, fast bowling attack only. Do you think Pakistan has the best fast bowling attack? Especially these 3 fast bowlers, Naseem Shah, Shaheen Afridi and Haris Rauf. If I compare them to the Australian trio of Hazelwood, Cummins and Stark, and another trio of South African fast bowlers. So how do you rank these 3 teams? Because Pakistan, South Africa, India के group में and Australia का पता नहीं, they've had a huge defeat, but still Yeah. I expect Australia to qualify at least in second position even now. So India might face Australia in the semi-finals. See, I think based on pure skill and ability and the options, it's very hard to look beyond South Africa for me personally. I feel they are in a much better shape in terms of the options that they give you with Rabada and Nokia being raw pace and Lugri have now developing a great, cutter, slower one as well. And then you also have Wayne Parner who can really move the ball around in the power play. तो आई थिंक डेप्थ ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के पास और साउथ अफ्रीका के पास है इन टर्म्स ऑफ फोर्थ ऑप्शन. आई थिंक आज पाकिस्तान मिस हैविंग एन एक्स्ट्रा सीमर. आज अगर उनके पास नवाज के बदले एक्स्ट्रा सीमर होता, दे वुड हैव लव्ड टू बोल दैट गाय, and it could be anyone, but then that's the bit. You don't have a Fahim Ashraf or anybody else who is in that great form कि आप उन्हें खिलाओ and be part of the squad. So I think I'll probably rate South Africa first, Pakistan second, and Australia third, because I think Australia are still too reliant at times on help from the deck. So it's probably a very small line between Pakistan and Australia, but I think South Africa probably just a bit ahead. और इंडियन bowling को कहाँ रैंक करेंगे? Because today the Indian bowlers did very well. If you see, Shami got a wicket, Bhuvi was ignored, Hardik got 3 wickets, Arshdeep, you spoke about redemption for him, got both the key openers for Pakistan. So आप top 3 में इंडिया की bowling रख रहे हो या just one of good day जहाँ मतलब हम बोल रहे हैं कि इंडियन बैटर्स पे इतना प्रेशर होने वाला है क्योंकि bowling weak है. So do you still agree to that? I think the Indian bowling is good, but it's not consistent. So maybe we can use that word more for this Indian bowling lineup, because we've known. See, quality पे किसी के भी doubt नहीं है. Bhuvi is great, Sham is great, Hardik is great, Arshdeep is, they're all great. Even Harshal Patel is a great bowler. But the point is, you have to be consistent over a period of time in different facets of the game, and that's where I think this bowling lineup that is now, it's probably too high variance in terms of when they have a great day, they'll have these figures, but when they don't, they're going to be 40 for one or 42 for one. So that difference is what you want to probably reduce a bit. And आज भी अगर आप देखो तो आप कहोगे कि शहीन शाह अफरीदी को रन बनाने नहीं देने चाहिए. Again, if you have been very very critical of how they bowled to Shan Masood, but again आप देखें Shan Masood also had a lot of luck I felt today. काफी उनके edges Yes. गए gap में. There was a run out that was missed, there was a catch that was dropped, and there was a spider cam incident as well. So वो अगेन इफ यू बीइंग मोर क्रिटिकल यू विल वांट कि भाई आपके 159 भी क्यों बनाने थे. यू शुड प्रॉब्ली कीप इट टू 130 or 135 काइंड ऑफ अ स्कोर व्हिच वुड देन रिड्यूस द प्रेशर ऑन द बैटिंग, क्योंकि कंडीशंस अच्छे थे बॉलिंग के लिए. आई थिंक वो जो कंसिस्टेंसी है, अगर वो इस बॉलिंग अटैक में आ जाती है तो देन दे कैन हैव द रन लाइक दे हैड इन द 2015 वर्ल्ड कप वेयर you saw Umesh and Shami consistently taking wickets up and setting the game for you well. बिल्कुल.
just taking this last question, which is Hassan. He's saying आसिफ अली को ड्रॉप 150 छक्के और नेट में ज़रूर मारते होंगे, यहाँ पे तो नहीं मार रहे. So do you think it's a good enough call to drop आसिफ अली and पाकिस्तान की क्या मतलब we've spoken about the middle order कि middle order is not आज जब मतलब दोनों openers out हुए middle order pressure था शान मसूद इफ्तिकार got 50s and they actually stood up मतलब था कि यार अगर पावर प्ले में बाबर और रिजवान को ले लो इंडिया has won the match. That did not happen. दो 50s middle order में पर हाँ फिनिशिंग का जरूर एक इशू रहा उनके लिए आसिफ अली का. So do you agree to what Hassan is saying? Firstly, though, I think it is always कि इंडिया के सामने you will always get new heroes. India has that tradition कि जहाँ जहाँ कोई नहीं चलता इंडिया के सामने कोई ना कोई चले जाता है. तो that tradition continued. With regards to Asif Ali, I think he is the designated finisher. अगर आप उनको compare करना है तो he is probably an equivalent of what India is trying to get out of DK in terms of very specific role. This is what we want you to do. But again, there is enough evidence for you that there are specific things that he struggles against, and in these conditions, you could make use of that. If you have good pace and you're getting good bounce on the surface, so you could put him in trouble. अब कहाँ पे आप उन्हें यूज कर सकते हो, whether you can play Wasim Junior. Now, again, I will not want Wasim Junior to be interested with the finishing prowess in terms of finishing responsibilities. You would still want that to happen from the three all-rounders that they are playing in Iftikhar, Shadab, and Nawaz. So I don't think they'll drop him unless he continues to have a terrible run in terms of 3-4 games and is not able to get going in any of them. तो फिर शायद आप ऐसा देखो कि मे बी उन्हें आप ड्रॉप करो. बट देन देयर बैटिंग इज एनी विच वेज हेवीली रिलायंट ऑन वन गाय बैटिंग वेरी डीप. तो अगर वो नहीं होता तो फिर जैसा आज हुआ, आज भी यू कुड हैव इजीली हैड शान मसूद वेरी अर्ली एंड इफ्तिकार अहमद बीइंग एट वन एंड विकेट्स फॉलिंग एट द अदर. So that's what they want. They want one of the top three to bat deep. And once that happens, you will see a much better performance from Pakistan. And आज भी they still got a pass score to defend. तो और एक ऐसे दिन पे जहाँ पे दोनों ही टीम की बैटिंग इतनी नहीं चली, थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा if we get Asif just for this one game. Hassan is continuously saying कि बैट सिलेक्शन की वजह से मैच हारा, 4 फास्ट बॉलर्स खिलाने चाहिए थे. हसन वी स्पोकन अबाउट दिस कि जैसे पाकिस्तान बैटर्स ने अक्षर पटेल का ओवर टारगेट किया वैसे ही इंडियन बैटर्स भी वेट कर रहे थे कब नवाज आएंगे. सो दोनों के लिए वहाँ इक्वल रहा. ऑल आर न्यू व्यूअर्स वाचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट on this video. Do subscribe to Sports Taza. Just one question before going on. The last question है, do you think So, इंडिया इज इन अ बेटर ग्रुप? क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप में ये हुआ था कि यार न्यूजीलैंड पाकिस्तान एक मैच हारो, बाकी 3 रिलेटिवली वीकर टीम्स है, तो यू नो अपसेट होने के कम चांसेस है. एंड वेयर एज अदर ग्रुप इज द ग्रुप ऑफ डेथ. तो विच ग्रुप वुड यू वांट टू बी इन? अगर आज का मैच इंडिया नहीं जीती होती तो I don't think इस साल में there is anything called a safe group. The way Australia lost the first game, I don't think anything is safe in this very year. We've seen Sri Lanka go from getting beaten to Afghanistan to taking the Asia Cup, and then you've seen stronger teams lose to weaker nations to say, and then still qualifying. But that team that beat them is knocked out. तो वेस्ट इंडीज भी बाहर है. तो आई डोंट थिंक इस फॉर्मेट में इतना अब वेरिएबल ये आ गया है अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ऑन द डे. अगर आप ठीक नहीं कर रहे हो तो इट डजंट मैटर हु यू आर, यू कैन फॉल फ्लैट एंड गो आउट. तो आई थिंक ये ग्रुप वैसे भी टफ था इंडिया का. तो आई डोंट थिंक इंडिया इज इन अ बेटर ग्रुप. आई थिंक बोथ द ग्रुप्स आर गोइंग टू बी क्रेजी एंड वी माइट सी क्रेजी रिजल्ट्स गोइंग अहेड. नो एब्सोल्युटली नॉट टू से कि कोई भी टीम है कोई भी ग्रुप आसान है, पर सामने वाला Yeah. ग्रुप मैं बोलूँगा रिलेटिवली थोड़ा स्ट्रॉन्गर ग्रुप है. आई एम नॉट सेइंग दैट यहाँ पर कोई भी वीक टीम है, वेदर ए गुड डे कैन बीट एनीवन, ये सब आ सकते हैं. पर यहाँ एक टीम ज़्यादा है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश इज़ नॉट इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म्स. तो मतलब अगर इंडिया पाकिस्तान से हार जाती है एंड पाकिस्तान साउथ अफ्रीका विन मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स, तो इंडिया का मैं वहाँ बोल रहा था कि ग्रुप ऑफ डेथ में नहीं होने के भी डिसएडवांटेजेस ज़रूर हैं, बिकॉज यू नो बाकी टीम्स को सब हरा रहे हैं. सो दिस वाज माय क्वेश्चन. ऑल टीम्स हैव प्लेड and hopefully there is a lot of cricket to follow. So we were very excited. जैसे एक सेंटेंस हर जगह इंटरनेट पे चल रहा है कि इस विराट, आपने सुना ही होगा कि विराट विन लिए हार्दिक शुभकामनाएं. So to cap that off, we like to wish all our
viewers a happy Diwali, and to all the Indians, it was an amazing match. लेकिन मैंने ये आज का मैच जैसे आरसीबी कैफे में देखा, और जब विराट कोहली और डीके बैटिंग करने आए, यू शुड हैव सीन द एटमॉस्फेयर मैन, इट वाज इलेक्ट्रिक. I know Bangalore has a lot of love for Virat Kohli, but when Virat Kohli was going and hitting, it was mad scenes, and it was a joy to watch and a joy for all Indians. So thank you, Nikhil, for taking out your time. Hopefully, get many more such matches. So Yep. thank you for tuning in. Thank you so much.